Hello, friends. I hope all of you are doing well and enjoying my classes. Today, we are going to learn the who are the users of accounting information, which means कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है एंड व्हाई इट्स नेसेसरी टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद देम. So let's start. There are two types of users of accounting information. First, let's discuss about internal users. So हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम टू टाइप्स ऑफ यूजर्स के संग हमें शेयर करना पड़ता है. फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स. अब आप पूछोगे मेरे से कि ये एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स में डिफरेंस क्या है. तो जब हम आगे बढ़ेंगे अभी तब आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल यूजर में आएंगे ओनर ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस के ओनर है, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो हमारे इंटरनल यूजर्स में वन ऑफ द प्राइमरी ओनर है जिनसे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है. सो वी शुड राइट हियर ओनर्स और शेयर होल्डर्स. हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं. जो कंपनीज होती हैं, जहाँ पर हमारे जो कंपनीज होती है वहाँ पर हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और जब प्राइवेट और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो वहाँ पर ओनर ऑफ द बिजनेस. सो यहाँ पर क्या बनाते हैं हम अकाउंटिंग में? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उसका. तो हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूजर है वो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ओनर ऑफ द बिजनेस है. नाउ लेट्स सी. अगर हम लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक रिलायंस. रिलायंस कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी. एट द उन्होंने अपने पैसे डाले हैं उस बिजनेस में. सो एट द एंड ऑफ द ईयर, एज एन ओनर ऑफ द कंपनी, ही वांटेड टू नो कि मेरा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट में मेरी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मेरे बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है. सो ऑल these थिंग्स द ओनर ऑफ द बिजनेस वांटेड टू नो. सिमिलरली शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, उनको भी ये जानना होता है कि जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है. क्या वो मुझे एक प्रॉफिटेबल परसेंटेज, जिस इंटेंशन से मैंने पैसा लगाया, जिस प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपेक्ट करके मैंने पैसे लगाए हैं, वो रिटर्न दे पाएगी या दे रही है या नहीं दे रही है. सो दे वी नीड टू शेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विद देम सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उनके जो पैसे हैं लगाए हैं उन्होंने कंपनी में, वो कितना रिटर्न दे रहे हैं हम. क्लियर हुआ आप लोगों को? यस. ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड यूजर. द सेकंड यूजर्स आर एम्प्लॉयज. नाउ आप पूछोगे हम एम्प्लॉयज को क्यों इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. एम्प्लॉयज कौन है? कंपनी में काम करते हैं. दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द कंपनी. अब आप सोचो, अगर हम उन उनको नहीं बताएंगे कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो हाउ विल दे अंडरस्टैंड दैट वेदर आई शुड एबल टू कंटिन्यू इन दिस कंपनी और नॉट. क्या इस कंपनी में मेरा ग्रोथ है? क्या ये कंपनी स्टेबल कंपनी है? उनको नहीं पता चलेगा. इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to communicate to the employees of the company
about the financial performance. The employee have a right to know what is the financial position of the company, whether the company is profitable or non-profitable, whether the company balance sheet is strong enough to meet the immediate liabilities or able to make the payment to the employees or not. So it's important to share the financial information, accounting information with the employees of the company. आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी देती हूँ यहाँ पर. इफ यू रिमेंबर किंग फिशर, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, suddenly they stop operation due to the financial crunch. अभी वहाँ उस समय जब वो कंपनी अचानक में बंद हुई, the employees really face a big challenge because they were not aware beforehand कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इतना खराब है. अगर उनको पता होता तो they will decide or they will leave the company before the before the company announce that it's not going to stop its operation. Similarly, Jet Airways, they also suddenly stop operation because they were not having enough money to run the operation. So all these are examples where employees really face a big challenge due to the non-awareness of the financial or the accounting information of the company. So it's important that employees should know about the financial information, and the management of the company or the who run the company, they should communicate the financial information to the employees. Now, the third user is management or board of directors. मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं और क्या होते हैं? तो अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, लाइक बिजनेस रन बाय वन पर्सन, वी कॉल सोल प्रोप्राइटरशिप, और पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पर दो से ज्यादा पीपल मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर ओनर और मैनेजमेंट मे बी सेम पीपल है, जो बिजनेस के ओनर भी हैं और बिजनेस को रन भी करते हैं. But when it comes to the big business, like the private limited company or the public companies, वहाँ पर ओनर और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं, क्योंकि बिजनेस का स्केल इतना बड़ा होता है कि ओनर जो होता है वो मैनेजमेंट टीम बना देता है, और उन मैनेजमेंट टीम को फुल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और बोलते हैं आप रेस्पॉन्सिबल हो इस बिजनेस को रन करने के लिए, एंड दे आर अलाउड टू टेक all the decision for the benefit of the business. ये मैनेजमेंट की टीम कौन होती है? दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 or 25 years इन द इंडस्ट्री, और इनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, वो नॉलेज होती है, विच हेल्प देम टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी. सो जो ओनर होते हैं वो उस तरह के पीपल को अपॉइंट कर देते हैं, एक मैनेजमेंट टीम बना देते हैं. The best miss in if you go and look into the public company which are listed in the stock market or stock exchange, you will, or in all the company there is a management committee or management team or board of directors who are responsible to run the business of the company, and they take all the decisions whatever is required while running the operation. सो यहाँ पर भी ये जो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, इनके संग भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे सो दैट दे कैन सी हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम. कौन से ज्योग्राफी में उनको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, कौन से कंट्री में इवन दे कैन एक्सपेंड they can expand an existing product, or if they want to launch a project, what type of product they should launch considering what is already available in the market. So जितने भी strategic decisions होते हैं which help the company to be more profitable or to scale its operation, वो सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम लेती है. इसके लिए इट्स important to share the accounting information, balance sheet and the profit and loss account as per product wise with full analysis and interpretation with these stakeholders. क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप इट्स क्लियर नाउ. लेट्स मूव टू
external users. Who are the external users with whom a company need to share the financial information? The first, we should say the creditors of the company. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार में रॉ मटेरियल खरीदते हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है हम मार्केट से उधार में खरीदते हैं और उनको हम पैसे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देते हैं, लाइक 45 डेज और 60 डेज एज पर द क्रेडिट टर्म अग्रीड विद देम। उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब इनसे हम माल खरीद रहे हैं तो अब अपने को लगेगा वाई शुड वी नीड टू शेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद देम। सो व्हाट इज हैपनिंग, हम इनसे उधार में माल खरीद रहे हैं। मतलब वी आर कमिटिंग टू आवर सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स की आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइक 45 और 60 days I am going to pay you the money, so please supply the good to me now and I will pay you after 45 or 60 days. Now definitely inco, it's the responsibility of the company to share the financial information with the creditor and supplier so that they will know कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, जिनको वो माल सप्लाई कर रही है। व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन अगर कंपनी सडनली बंद हो जाए, अगर कंपनी ने अपना बिजनेस सडनली स्टॉप कर दिया तो क्रेडिटर किससे पैसे लेगा? तो इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि क्रेडिटर से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए। दे वांट टू नो द कंपनी पोजीशन इन विच दे आर इन्वेस्टिंग their money, and also they wanted to know the company in which they are investing whether those companies are capable to pay the outstanding liabilities on time or not. Thus it is important to share to have the financial information with the creditors. Now, the second one with whom we need to share the financial information, banks or financial institution. अब आप सोचोगे हमें बैंक के साथ क्यों शेयर करना चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्यों शेयर करना चाहिए? एक्चुअली अगर फॉर रनिंग द बिजनेस मैंने बैंक से या कोई भी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे मेरे बिजनेस में लगाए हैं and I have committed to them कि I am going to pay interest on the loan every month or every quarter and the principal amount after a stipulated period of time. So it is important to share the financial information with bank and financial information so that उनको ये पता चले उनको ये पता चले कि as a company I am very much capable, I am solvent and my position is strong to pay interest and principal amount on time. Understood? So let's move to the next external user. Third is our customers. Customer, the company or the organization to whom I am supplying the good. अब आपको लगेगा कि हमें कस्टमर को क्यों इन्फॉर्म करना है, कस्टमर को क्यों बताना है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल, एज अ कंपनी, माय कंपनी, सॉरी, माय कंपनी नेम इज लेट्स से अपना RS लिमिटेड एंड आई एम सप्लाइंग टू, suppose I am supplying to a डिफेंस कंपनी, मेरे से गुड्स लेकर ये कंपनी
फर्दर प्रोसेस करती है, एंड देन दे सप्लाई टू द अगेन वन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी को. नाउ कस्टमर एज ए सब एज ही इज आवर कस्टमर, सो ये कंपनी दे आर इंटरेस्टेड इन माय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. अगर मैं फेल हो गई गुड्स एंड प्रोडक्ट को टाइमली सप्लाई करने में टू इस कंपनी, तो ये कंपनी फर्दर प्रोसेस करके गवर्नमेंट कंपनी को नहीं सप्लाई कर पाएगी, अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगी. मेरे फेल होने से इस कंपनी का भी बिजनेस हैम्पर होगा, इस कंपनी का रेप्यूटेशन हैम्पर होगा. सो द कस्टमर इज इंटरेस्टेड हाउ आई एम परफॉर्मिंग, what is my financial position. So it is important to share the financial information with the company, with the customer. So that's why company or our customer are also interested in our financial information. Then और हमें किससे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए? टैक्स ऑथोरिटीज. एज अ कंपनी मैं कहाँ पर सेटअप हूँ? आई एम सेटअप इन अ कंट्री, लाइक मेरा बिजनेस इंडिया में सेटअप है, तो मैं इंडिया में अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो आई हैव टू फॉलो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडियन इन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड उसके अंदर मेरे को अपना बिजनेस करती हूँ मैं, और उसके बेसिस पर मैं जो प्रॉफिट करती हूँ, मेरे को अपने प्रॉफिट में से टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं उस कंट्री में बिजनेस कर रही हूँ. सो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो वो हम कैसे देंगे? जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उससे हम टैक्स कंप्यूट करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. एंड विद द टैक्स, एंड देन विद दैट वी आर आल्सो सबमिटिंग आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द टैक्स अथॉरिटी, सो दैट they will know कि how much I am doing the profitability, and what is the tax derived on my business, how much tax I paid, whether I have paid the tax according to the profitability I have earned through my business. So that's why हमें टैक्स अथॉरिटीज को भी शेयर इंफॉर्मेशन करना है. नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर हियर इज सेबी. आप पूछोगे सेबी क्या होता है? सेबी इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. जो कंपनीज लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, वो कंपनीज सेबी उस उन कंपनीज को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. और सेबी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टू इवेल्युएट द कंपनी who are listed on the stock exchange, how they are performing, what is their profitability, how their financial position look like. SEBI actually monitor the company who are listed in the stock exchange. So इनको भी financial information की जरूरत होती है. They also wanted to know how the company is performing. They are also one of the user of financial information. Now the next users of financial information will be competitors. जो हमारे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है, ये अपने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाकर पब्लिश करती है. दे पब्लिश एनुअल रिपोर्ट on an annual basis, highlighting all the parameters like how they are performing, what is their profitability, what is their balance sheet situation, cash position, company क्या strategy adapt कर रहा है, what is their company future plans. So the company disclose all the information in the annual report. सो जो कंपिटिटर्स होते हैं वो भी इवेल्युएट करते, दे ऑल्सो वांटेड टू नो कि उनकी जो इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, लाइक आई वुड टेक एन एग्जांपल ऑफ आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर अपनी बिग बिग नॉच कंपनीज कौन कौन सी है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, माइंड ट्री.
सो क्या होता है, ये कंपनीज इनको अपने एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये, or as a competitor, because if I'm a Wipro, I am obviously these all are my competitors, so I wanted to know कि ये कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है, इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, accordingly I will look into my performance and I will adapt my strategy. So competitor भी जो है financial information को use करता है to evaluate and to understand how the company, how the financial position look like, and what strategies the competitors are adopting. क्लियर हुआ ना? These are all applicable to the companies which are listed or which are public limited, who publish their annual report on an annual basis. Now, so the last user is credit rating agencies. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है? ये वो एजेंसी है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करती है कंपनीज की या फिर एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स की, कंट्री की, टू असेस वेदर दे आर केपेबल टू repay the debt or not. And these rating agencies are very important when it comes to the big investment which the any investor is doing in a company, or when the bank is giving a loan to a company. सो इनकी जो रेटिंग एजेंसी होती है, ये असाइन करती है कि स्कोर टू द कंपनी, कि इस कंपनी का स्कोर क्या है. अगर स्कोर 1 है, विच मीन्स द कंपनी इज वेरी गुड, इफ वी कैन गिव द लोन, इफ द बैंक इज गोइंग टू गिव द लोन, और अगर इन्वेस्टर ने अपने कुछ पैसे इसमें डाले हैं, तो उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है. और अगर बैंक ने लोन दिया है, तो द कंपनी इज पेबल टू पे द डेट, टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन टाइम. सपोज अगर रेटिंग 4 और 5 है, which means the company is a high risk company. It may happen कि कंपनी लोन या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट करने में फेल हो जाए. अगर इन्वेस्टर ने अपने पैसे डाले हैं, तो इट में हैपन कि उनको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न न मिल सके. सो दोज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर एनालाइज by this company, and they are using the financial information of the company for analyzing this information or providing the credit score. These credit rating agencies are approved by RBI also. So it's not कि कोई भी एक rating agency खोल सकता है. These are very much approved, and all the investors or the banks are relying on the rating given by these rating agencies. So now here we are on the end of the session of users of accounting information. तो हमने क्या देखा? Let's take a quick summary of whole class. The financial information के जो users है, they are segregated into internal users and external users. Internal में क्या है? हमारे owners है, shareholder of the company है, employees आते हैं, management है, board of directors है. ओनर और शेयर होल्डर वो इन्वेस्ट किए हैं अपना पैसा, तो दे वांटेड टू नो what is the financial position of the company, what is the profitability of the company, how the company is performing. तो इसके लिए they are very key users. Employees, वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है. अकॉर्डिंगली दे विल टेक अ डिसीजन अबाउट देयर करियर पाथ, about their growth. So employees also should know about the financial position. And then management, because they need to take the strategic decision for expanding the operation of the business, for deciding whether what type of product they should launch in the market. For so definitely management and the board of directors are using the financial information for strategic or business decision making, so they are also key users of the financial information. Now when it comes to external users, हमें creditors को देना चाहिए, because we are purchasing goods and services on credit. Bank and financial institution, because they are paying us loan, they want to know whether we are capable enough to pay principal and interest on time. Customers, because हमारा production of goods and services to this company depend further either to consumer or to another businesses. Tax authorities, so that we can pay tax to the government. SEBI, Security and Exchange Board of India, they are mainly responsible for the company's financial information who are listed on the stock market. Competitors, they want to assess how the competitors are performing, what strategy they are adapting. And then the credit rating agency,
who are using the financial information to assess the borrower's ability to repay the debt, and accordingly they are assigning the score. So these are the users of the financial information. In general, obviously in the exam आपके question आएगा who all are users of the financial information, so you can write that. And at the same time, from the practical perspective, it's important to know कि हम जो accounting बनाते हैं उसके ultimate users कौन है, उसको कौन यूज कर रहे हैं, and what type of, and for what purpose. So that's why from the knowledge perspective it's important to understand this topic. I hope आप लोग को topic समझ में आया and you are enjoying my classes. Thank you everyone. And yes, if you like the class, then please don't forget to like or subscribe my videos.